So when you are receiving any zip file, the first step is to extract your file. So basically, to extract this file, you have to copy or maybe you can create one folder. आपको एक folder बनाना है into D drive or E drive wherever you are comfortable. Make a D drive. मैंने जैसे access practice किया है and I have copy that all supportive file into zip folder. You can see कभी भी आपको exam में if you are having a zip file, so first step is to right click on this. Just do extract here. सो व्हेन यू आर डूइंग दैट आपको एक यहाँ पे ये जैसे एक्सेस का जिप फाइल है उसका एक आपको फोल्डर बन जाएगा एंड इन दैट फोल्डर यू हैव ऑल द सपोर्टिव फाइल ऑफ दिस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ आफ्टर दिस अगर मैं ये वर्ड का फाइल ओपन करूंगा सो यहाँ पे आई हैव एमएस एक्सेस का क्वेश्चंस. ओके, सो उसके अंदर आपको क्या करना है, रीड ऑल द थिंग्स वेरी केयरफुली. लाइक यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि मेक श्योर डेट्स आर DDMMYY, import J218 students.csv and this. So when you want to start this thing, सबसे पहले आपको करना है you have to select you have to open MS Access. In that blank database, in blank database सबसे पहले आपको यहाँ पे भी आपको you have to save with your name और maybe with अगर आपको जो भी दिया हुआ है कि आपको बताया गया है कि आपको आपके सैप आईडी से आपके नाम से या XYZ इंस्ट्रक्शन दिया है इन पेपर, सो यू हैव टू सेव दिस फाइल इनटू डी ड्राइव और ई ड्राइव जहां पे आपने फोल्डर आपका बनाया हुआ है. जैसे मैंने डी ड्राइव में यहाँ पे बनाया हुआ है तो मैं उसके अंदर ही जैसे मेरा कोई भी एक नंबर है जो मुझे दिया है कि यू हैव टू सेव इनटू दिस नेम, तो आपको B006 और वट एवर आपको जो आपका नाम देना है या आपको एग्जाम आईडी दिया होगा या कोई भी उससे आपको सेव करना है. नॉट विथ योर रोल नंबर, नॉट विथ योर नेम. ओके, सो जस्ट क्रिएट दिस. ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपका नाम आएगा एंड इट इज इन दैट फोल्डर ओनली. सो फर्स्ट आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग दैट थिंग यू हैव टू सेव योर डेटाबेस इनटू सेम फोल्डर जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है. ओके, नाउ आई डोंट वांट दिस टेबल तो राइट क्लिक करके मैंने इसको क्लोज कर दिया. देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंपोर्ट. you can read the first question very carefully. Import the data, right? So for that go to external data. यहाँ पे you can see import and link. उसके अंदर आपको करना है टेक्स्ट फाइल. सो टेक्स्ट फाइल होने के बाद you have to just click on browse. in browse go to D drive. D drive जो हम लोग ने फोल्डर बनाया है एक्सेस का and J218 student open. Just do OK. So whenever you are importing, by default this import text wizard will come. उसमें आपको पहले ही करना है next. Second step is first row contain field name. So आपका like I'll show you. यहाँ पे you can see this is CSV file means comma separated value means यहाँ पे one जो heading है उसको भी वो record one ले रहा है. So I don't want like that. So you have to just click on next. Just click on first row contain field name. Again click on next. The second step you have to go to advanced. So in advanced, why? Because in question यहाँ पे हमको data type specify किया हुआ है. For example, मुझे ये first name text में चाहिए, text, family name text. तो यहाँ पे मुझे data type दिया है. So this is my field name, this is my data type. In data type also it is DMY और यहाँ पे mention किया हुआ है DMY. So it is the most important part of your when you are importing. So read all the things very carefully and फिर आपको यहाँ पे DMY तो आपको फर्स्ट स्टेप करना है. यहाँ पे अगर MDY होगा और आप अगर गलती से इंपोर्ट करते हो देन इट इज गोइंग टू गिव यू इंपोर्ट एरर. ओके,
सो फॉर एग्जांपल हम लोग एक ट्राई करते हैं, अगर इंपोर्ट एरर आ रहा है तो आई जस्ट शो यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। सो समटाइम्स आपका यहाँ पे इंपोर्ट करने के टाइम इंपोर्ट एरर आएगा, बिकॉज हम लोगों ने वहां पे डेट, मंथ एंड ईयर सिलेक्ट नहीं किया। सो एट दैट टाइम डिलीट दिस, डिलीट दिस ऑल्सो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग सर हमारा पीसी खराब है। सो इट इज नॉट पीसी प्रॉब्लम, राइट? सो इट इज लाइक हम लोगों ने राइट स्टेप फॉलो नहीं किया हुआ है। सो फॉर दैट अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे अगेन आई एम सिलेक्टिंग ब्राउज दिस, ओपन, ओके, नेक्स्ट। फर्स्ट रो contain field name, advance, and the first step is you have to select DMY, that is date month year format। एंड यहाँ पे अगर मुझे जो जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे डेट है यहाँ पे फुल टाइम, यहाँ पे मुझे इफ आई चेक माई, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट और बुलियन दिया है, यहाँ पे डेट। तो फर्स्ट स्टेप इज मुझे ये सब सेल्स परफेक्ट करने के। जैसे यहाँ पे मुझे शॉर्ट टेक्स्ट दिया हुआ है, सो वेयर इज माई शॉर्ट टेक्स्ट, ओके। एंड यहाँ पे बुलियन दिया हुआ है, बुलियन में यस एंड नो, एंड व्हेन डू यू जस्ट डू ओके। फिर यहाँ पे मुझे ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे प्राइमरी की, आई हैव टू सेट माय प्राइमरी की एज ए स्टूडेंट आईडी। So again, most of the students are doing mistakes while selecting this. So आपको करना है next, next, and यहाँ पे many people are using this let access add a primary key. So when it is mentioned कि आपको student ID करना है, so यहाँ पे आपको you have to select this, and यहाँ पे directly you can select student ID as my primary key. So primary key basically is a unique record, and that's why you have to select that as a primary key. Go to next and finish, and then close. So now you can see यहाँ पे import error नहीं आ रहा है, because हम लोगों ने हर step properly किया हुआ है। Now next step is a design view. Okay, so design view में जो मुझे बताया गया था कि date and time में I have to follow certain thing, like जैसे यहाँ पे मुझे example दिया हुआ है 19 June 7, right? So I have to set same date format by selecting in format। यहाँ पे आपको you have to select जैसे यहाँ पे मीडियम डेट दिया हुआ है जो हमको मेंशन किया हुआ है विद द एग्जांपल, एंड यहाँ पे आपको यस एंड नो करना है। सो दैट इज योर यस एंड नो। बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस यस एंड नो एंड आप इसको सेव करते हो और जब यहाँ पे देखते हो, तो यहाँ पे अगर मुझे यस एंड नो आ रहा है देन इट इज फाइन। इफ इट इज नॉट कमिंग बाय एनी चांस, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, सेव करता हूं मैं, रन करता हूं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रू एंड फॉल्स। सो बाय एनी चांस अगर वो नहीं आ रहा है, देन हियर इन लुकअप यू हैव टू सिलेक्ट दिस एज ए कॉम्बो बॉक्स फॉर यस एंड नो। एंड डेट में वी हैव मेंशन मीडियम डेट। एंड इफ अगर आपको बोला है इफ यू हैव टू copy screenshot, so you have to just press print screen, and then in word after the particular question अगर आपको बोला है कि like screenshot of design view, तो आपको यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है, दैट इज कंट्रोल वी, एंड इसको आपको करना है फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट करके, या फिर यहां से रैप टेक्स्ट करो, आप कर दो टॉप एंड बॉटम। सो व्हेन यू आर हैविंग अ सेकंड क्वेश्चन लाइक, सो एग्जैक्टली यू कैन मेंटेन दैट गैप। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे आई हैव टू चेक कि मुझे स्क्रीनशॉट सी इन एविडेंस डेटा टाइप्स यूज इन टेबल्स, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट दिया। नाउ दिस इज माय सेकंड स्क्रीनशॉट ऑफ दैट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। सो अगर मैंने इसको रैप टेक्स्ट करके टॉप एंड बॉटम किया है, सो यहाँ पे अगर मेरा सेकंड क्वेश्चन है
so I can paste my screenshot properly with proper formatting. So my first step is clear: save data, importing, and managing all the format with data type. Now second question is import the second table. Same way, the main question is do not set any primary key, and then create one to many relationship between student ID and register ID. So I am just following the steps. That is, I am importing one more table, that is external file, text file, browse, टेस्ट डेटा, जो मुझे फाइल बताया गया है, जस्ट डू ओके. सेम वे हियर भी आपको क्या करना है, फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम, गो टू एडवांस. यहाँ पे सेम वे आपको डीएमवाई करना है, सो इट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप. जस्ट डू ओके, क्योंकि इसमें मुझे कोई डेटा टाइप के बारे में कुछ बोला नहीं गया है. एंड बी वेरी केयरफुल, जब भी मुझे बोला है देर इज नो प्राइमरी की, देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस फॉर ईच एंड एवरीथिंग. आप देर इज अ मार्क, सो आपको हर चीज परफेक्ट करना है. So now I have both the tables. Now the next step is to create a relationship between two tables. So यहाँ पे database tool में जाना है आपको. Go to relationship. You can add both the table by using shift. Select both the table. Add करो, close कर दो. Now यहाँ पे बहुत specific question किया है, like relationship between student ID and register ID. So if you want to create a relationship between two table, यहाँ पे यू कैन सी प्राइमरी की. यहाँ पे अगर मुझे ड्रैग करना है, सो बेसिकली इट इज नोन एज फॉरेन की. सो यहाँ पे आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऑन दिस. सो नाउ बाय डिफॉल्ट दैट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड. एंड सेम वे आपको इस चीज का स्क्रीनशॉट देना है, लाइक वन टू मैनी. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे दिया गया है यू हैव टू क्रिएट अ वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, and you have to place a evidence document में screenshot also. So for that again print screen. Same way यहाँ पे अगर मेरा second question है relationship between two tables, so control V. So this is my second screenshot of relationship between two table with one to many. सेम वे आप इसको भी एज ए रैप टेक्स्ट करके यहाँ पे टॉप एंड बॉटम कर दो, और यहाँ पे फॉर्मेट में गो टू रैप टेक्स्ट एंड टॉप एंड बॉटम. सो यू हैव टू नाउ, लाइक जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है एग्जैक्टली हम लोगों ने यहां तक स्टेप प्रॉपर्ली कर लिया है, राइट. रिलेशन बिटवीन टू टेबल, राइट. So just create a relationship. So this is now relationship between two table. You can see you can edit by double click on this one to many relationship. So this is known as join type. One like relation type is one to many. Okay. And यहाँ पे you can delete. Sometimes if you want to delete, then right click करके आप delete भी कर सकते हो. So up till how to import data or import any CSV file into Access, how to change the data type with suitable data type you have to select, and to create a relationship between two tables, right. So